So good evening friends, welcome to Malhotra's IAS. So guys, here we are about to start the session. So today we will look into the editorials, important editorials which were published in your business line newspaper. So we are picking that up. We are about to start the session. The PPT for this particular session will be uploaded within 1 minute. I will be uploading the PPT for this particular session. You have to give me just 1 minute. So I'll upload the PPT. So then we are going to start the session. So you have to give me just 1 minute here. Now this is the explained series that we are covering here, and today we are going to discuss some of the editorials from business line newspaper as I found them to be important for our exam. One of them is related to MSP. Okay, that how legalizing the MSP it is going to help farmers, that if we provide legal status to MSP, how it is going to help us. We will look into that. Okay, that aspect will be covered here. And apart from that, there is another editorial regarding the regulation of digital currency. Okay, that it is important that we regulate these digital currencies. These days there are a lot of news regarding the cryptocurrency and all, so we will be covering that. Okay, so these are the two topics that we will be covering in this particular session. So again, we are coming out with these initiatives. So if you are supporting this type of initiative, we will continue business line newspaper as a series for your exam. Okay, तो हम business line के editorials जो है as a series भी cover कर सकते हैं. So here we are. Good evening everyone. So people are joining us. Okay, so these are the two editorials that we will be covering. So MSP guarantee is pro small farmer. Okay, so first editorial that we will be covering is regarding the MSP, that how MSP is pro small farmer. ठीक है कि स्मॉल फार्मर के लिए एमएसपी जो है कैसे बेहतर है. These are the important findings regarding MSP and all, so we will be covering that. Okay, so again, this is the new initiative by us. So in this new initiative we will be covering the business line newspaper editorials. Okay, important editorials which are important for your UPSC preparation, and in this we will be covering the business line newspaper. So on your request we can cover some other newspapers as well. So let's start the session. Let's see what exactly is there for us in this session. So here we are. Now it is saying that MSP guarantees pro small farmer. It is providing us some valuable facts. Okay, valuable facts in the sense, in your answers you will be using this type of factual information. Okay, specifically the question will be asked in your GS paper 3, and we will be covering this particular thing. So let's see what exactly is there for us. Okay, now recently the announcement has been made regarding the abrogation of farm laws. We know about these particular things. Okay, these are the initial success that farmers have gained through their collective action. Okay, but there are a lot of issues that are prevailing. So right now, if you look into the whole movement, so it was primarily Haryana and Punjab farmers, okay, and the Western UP farmers. They fought this particular battle. They carried out this particular agitation against the government. Okay, so this is the situation. Now, what it is showing, that it is showing that everywhere the farmers were not in touch with this particular agitation. सब जगह ऐसा नहीं था. Okay, what was the reason? You know this particular part, that this is the agricultural area and this is the state list subject. So every state has different way of working. Okay, that's the point here. Other thing is that farmers, they are disconnected. Somewhere farmers are disconnected, and Shanta Kumar committee report says that in India only 6% of the farmers, they could sell their produce through government agencies. मतलब एमएसपी की अगर हम बात करें तो सिर्फ 6% फार्मर्स को एमएसपी का बेनिफिट मिल रहा है. एंड इवन इन दैट एस्पेक्ट दिस होल प्रोक्योरमेंट इज एक्सट्रीमली अनइक्वल. बहुत ही ये अनइक्वल है. दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर. दिस प्रोक्योरमेंट इज एक्सट्रीमली unequal. Now there are some factual information regarding it, that during the 2017 to 20, within the span of 3 years,
Punjab accounted for 37%, Haryana accounted for 25%, Madhya Pradesh for 21%, and UP 13% for total wheat procurement. What about other states? सारा प्रोक्योरमेंट तो यहां से हो गया. इफ वी काउंट इन टोटल, देखो अगर इसको हम टोटल में काउंट करें, सो पंजाब 37 प्लस 25%, ओके, नियर अबाउट 52%, प्लस 21%, अगेन 73, देन 13, ओके, देन 13. So this is how like it shows that other states are neglected. Their farmers are not able to, you can say, use this particular benefit of MSP. ये एक important development है. Okay, it means that the network of MSP is quite weak. The network of this particular MSP is quite weak. Now Punjab accounted for 26% and Haryana 9% of total paddy procurement. Okay, Punjab accounted for 26% and Haryana 9% for total paddy procurement. Okay, this is the point. Rice के केस में ऐसा हो रहा है. West Bengal, which is one of the top states in rice production, accounts for only 4% public पैडी प्रोक्योरमेंट. वेस्ट बंगाल में जहां पे सबसे ज्यादा एक तरीके से राइस होता होगा, वहां पे बिल्कुल भी प्रोक्योरमेंट नहीं है. व्हाट अबाउट फार्मर्स ऑफ वेस्ट बंगाल? उनके बेनिफिट्स का क्या होगा? Okay, so this is what has been pointed out, that MSP, it is not benefiting farmers uniformly throughout the country. Okay, now government procures only a few crop but declares minimum support price for 23 crops. Okay, MSP decided on the basis of cost of production. MSP is decided on the basis of cost of production, that's for sure. Okay, so government is not bound to purchase all the crops on the declared MSP. That's the other part. Government is declaring MSP, but it is not bound to buy it on MSP. This is what you should know. डिक्लेयर करना एक और बात होती है, पब्लिक सेंटिमेंट्स के लिए, पब्लिक की सपोर्ट के लिए डिक्लेयर हो जाता है, बट आर दे बाइंग इट इन रियलिटी? दैट्स द क्वेश्चन. ओके, सो हैविंग अ लीगल मैंडेट, हैविंग अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि लीगली आप किसी को मैंडेट कर रहे हो, लीगली आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो. ओके, नो इश्यूज विद दैट. नाउ पब्लिक प्रोक्योरमेंट स्टेबलाइजेस द प्राइस एंड चेक्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय प्राइवेट ट्रेडर्स बाय बेंचमार्किंग प्रोक्योरमेंट प्राइसेस. ओके, बेनिफिट क्या है यहाँ पे? क्योंकि प्राइस काफी कुछ स्टेबल हो जाते हैं इफ यू आर प्रोवाइडिंग लीगल स्टेटस टू एमएसपी. ओके, इट इज गोइंग टू हेल्प फार्मर्स अ लॉट. फार्मर्स को बहुत हेल्प होगा, बिकॉज प्रेजेंटली ऑल द फार्मर्स दे आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस एमएसपी. सबको बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, सबको बेनिफिट नहीं हो रहा है. ओके, so this is the point here. So first of all you have to understand, if you are giving the legal backing, अगर आप legal backing देते हो तो उसका ये benefit होगा. Now in this regard, the impending demand of the farmer, although guaranteeing MSP, would improve opportunities to receive fair prices by farmer. Okay, the impending demand of farmers, although guaranteeing MSP, would improve opportunities. ठीक है ना भाई, फार्मर को अच्छे सी फेयर प्राइस मिलेगी, इसमें बुराई क्या है? अगर आप एमएसपी के थ्रू एमएसपी को लीगल बैकिंग देते हो, इट विल फर्दर एनकरेज फार्मर्स टू इन्वेस्ट मोर इन एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. फार्मर्स को और बेनिफिट मिलेगा, ओके, कि वो एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी. अगर एक्स्ट्रा इनकम होगी तो ये तो जरूर बेनिफिट होगा. सो दिस लॉ गारंटिंग द एमएसपी हैज मल्टीपल implications as well. First thing is that the disparity between states and the crop in assessing the benefit of public procurement may be evened out under the law. Okay, चीजें ठीक हो सकती हैं. स्टेट्स के बीच की जो डिस्पैरिटी है, दैट कैन बी डेल्ट विद, वो बिल्कुल ठीक हो सकती है. राइट नाउ वी आर सीइंग दैट सम ऑफ द स्टेट्स, स्पेसिफिकली हरियाणा, पंजाब, यूपी, दे आर रीपिंग मोर बेनिफिट. उनको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स. ओके, so in this particular scenario, if you are having a legal backing for MSP, first of all its implementation will be uniform. सब जगह ये यूनिफॉर्म होगा. ओके, सब जगह ये यूनिफॉर्म होगा, ठीक है ना. So that's the point here, सब जगह ये यूनिफॉर्म होगा. ओके, now this would not only improve farmers economic well-being but also empower them as a united force. This would not only improve farmers
economic well-being but also empower them, okay, because across the country it will have some implementation, पूरे country के अंदर इसका implementation होगा, so सारे farmers को इसका फायदा होगा, okay. Now one reason the current farmers protest could continue for a long time is the better economic condition for farmers of Punjab, okay. एक reality ये है कि ये protest इतना लंबा क्यों चला, because from Punjab and Haryana the farmers are more well off, they can deal with this, okay. On the other hand, it had to continue for so long. It was due to lack of shared interest across the farmers across India. Okay. So right now ऐसा क्यों हुआ? देखिए बाकी जगहों पे क्यों एजिटेशन नहीं चलते और हरियाणा पंजाब में क्यों चल गया? One of the reason is that here the farmers are relatively more prosperous. Okay, they have more money to sustain. This was the reason. This is not the case with other farmers, and this shows that there is somehow lack of shared interest across the farmer community in India. सब जगह ऐसा नहीं है, सबके दर्द अलग अलग है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, okay. So any collective action requires shared objective and resource, okay. Any collective action requires shared objectives and resource. Lack of resource to continue with the movement may end up in assurance from the government at the best with no actions taken afterwards, okay. कि इसके बाद कोई भी सिर्फ एश्योरेंस होता है बहुत जगहों पे एंड गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन, ओके. बट इन दिस केस द गवर्नमेंट हैज बीन फोर्स्ड टू टेक एक्शन. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ओके, द एफर्ट वाज ड्यू टू द कलेक्टिव एफर्ट बाय द फार्मर्स ऑफ दीज थ्री स्टेट्स. उस वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है ना. सो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है. नाउ गवर्नमेंट गेव अश्योरेंसेज ऑफ लोन वेवर बट अगेन थिंग्स आर नॉट प्रोमिस्ड, ओके. बहुत बार ऐसा हो चुका है. Other idea is of shared goal. Now lack of shared goal came out overtly during the current farmers protest, okay. क्यों ऐसा हुआ? That other states, the farmers from other states, they were supporting their movement, okay. लेकिन वो धरने पे नहीं बैठे हुए थे. You need to understand this thing, ठीक है ना. That's why it was different. That's why it was different, okay. So effectiveness would again depend on the state implementing agencies. Now you need to understand, हमने announce तो कर दिया कि हम इन laws को वापस लेंगे, but how you are going to implement them? How you are going to implement them, okay. कैसे आप एक दूसरे को implement करोगे, इनको implement करोगे? Again things depend on दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके. चीजें इस चीज पर डिपेंड करती हैं, सो ये आप समझें, ठीक है ना. नाउ अदर आइडिया इज ब्रेकिंग द इंटरलॉक. द थर्ड इशू दैट अ गारंटीड एमएसपी में ब्रेक द इंटरलॉकिंग ऑफ मार्केट्स बाय रूरल मनी लेंडर्स, ओके. देखो मनी लेंडर कैसे काम करता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. पूरा डिजाइन आपको समझना पड़ेगा कि हाउ द मनी लेंडर वर्क्स, ओके. हाउ डू दे ऑपरेट? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दे समहाउ ऑपरेट बाय मोनोपोली. कुछ हद तक एक मोनोपोली वो लेके आते हैं यहाँ पे, ओके. एंड दिस इज द ओल्ड एज प्रैक्टिस इन रूरल इंडिया दैट इज एग्जिस्टिंग. सो दीज मनी लेंडर्स, दे आर सप्लायर्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स, दे आर एम्प्लॉयर्स एज वेल एज द बायर्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स, ओके. सब कुछ ये खुद ही करते हैं. दे विल सेल देयर सीड्स टू फार्मर, अपने सीड्स जो है फार्मर को बेचेंगे, ओके. दे विल प्रोमिस फार्मर दैट दे विल गिव देम मनी, सीड्स बाय करने के लिए मनी भी देंगे, ओके. ये भी चीज है, मनी विल ऑल्सो बी गिवन, ठीक है ना. एंड दे विल चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैट. उस पैसे के लिए ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, कोई इशू नहीं है, ओके. अदर थिंग इज दैट मनी है, ठीक है, सीड्स उनसे ले लिया. आफ्टर दैट दे विल प्रोमिस दैट वी विल बाय योर प्रोड्यूस एज वेल. अब जब चीज खरीदने की बात आती है, देन अगेन दे विल ऑल्सो ऑफर द लेस अमाउंट, ओके. थोड़ा सस्ते में चीजों को खरीदेंगे. सो दीज आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दैट आर एग्जिस्टिंग. सो मनी लेंडर्स का प्रॉब्लम सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसे उधारी तक है. दे आर सप्लायर्स, सप्लायर्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स, एम्प्लॉयर्स एंड बायर्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ओके. नाउ अ सिंगल पर्सन इंटरलॉक्स द फार्मर्स in credit, input, labor and product markets, okay. They determine the terms in every market, which is often in their favor. As a result, farmers are exploited at every market, causing vicious circle of poverty, okay. Now this primitive practice is also prevalent in non-farm activities such as weaving. ये जो प्रैक्टिस है, ये वीविंग जैसी प्रैक्टिस में भी, वीविंग जैसी एक्टिविटी में भी आती है, okay. So this is how these money lenders work, and definitely we have to break that nexus, okay.
इट विल बी पॉसिबल ओनली आफ्टर प्रोवाइडिंग लीगल स्टेटस टू एमएसपी. जब आप लीगल स्टेटस दे दोगे सो एक अश्योरेंस होगा फार्मर को दैट मिनिमम दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू गेट थ्रू द फॉर्मल एजेंसी. सरकारी एजेंसी होगी, दे विल गिव मनी टू देम. ओके, सो दिस दैट्स व्हाई इट इज वेरी इफेक्टिव. Now, other issue is regarding the small farmers. They are often turned away from the market. Okay, they fail to sell their agriculture products if they do not go through the middleman, the ones who interlock different market. Okay, तो जो छोटा फार्मर है उसको तो मिडलमैन के पास जाना ही जाना पड़ता है, ठीक है ना. सो that's the important part here, and because of that he might not even be able to sell its product. So अपना प्रोडक्ट शायद वो बेच भी ना पाए. Okay, so this is the concern that has been pointed out. Now a guaranteed MSP to the farmer would help small farmers access market better. Okay, so market will be accessed in a better way, but credit at the fair terms should be available through alternative institutions. Okay, कि whatever requirement is there for credit, for that you need to provide alternative institution. कुछ ऐसे अलग से institutions जो हैं उनकी जरूरत है वो हमें जरूर देने चाहिए. Okay, so these are the things that are pointed out. Now the inability to do so has resulted in the failure of different farmer producer organization promoted by the public funds. Now they are a major failure. They are a major failure. तो हम ये सोच रहे थे कि farmer producer organizations, they will perform better, they will play the role of credit provider, कि कहीं ना कहीं credit provider का role जो है ये पूरा करेंगे. But this is how they are failing. Okay, this is how they are failing. These farmer producer organizations, they are developed out of self-help groups. Okay, and are found to be better performing. Both access to credit and pre-existing social capital have helped them. Okay, both access to credit and pre-existing social capital have helped them. Okay, ये एक चीज आ रही है यहाँ पे. And it is important that farmer unions, they should address issues that affect all of the farmers. Okay, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हरियाणा और पंजाब के farmers के लिए fight कर रहे हो. It is important that you fight for all. That's the point here. And this is how it is seen as a golden opportunity. That's why farmers across the country, they should join hand and they should fight for this legal status to MSP. इनको जरूर ये fight करनी चाहिए. It is going to help them. Okay, इनको जरूर इनकी help मिलेगी. Help जो है इनको करनी चाहिए. Now there are this is the second editorial that we are going to discuss. Here they are talking about regulating one important area जो हमारे लिए जरूरी है, रेगुलेटिंग द फिनटेक. ओके, फिनटेक क्या है? देखिए, इन द फाइनेंशियल अरीना देयर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, सच एज क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, काफी चीजें आगे बढ़ रही हैं. ओके, तो ये एक अच्छी चीज है. एंड दे मस्ट बी चेक्ड अर्ली टू प्रिवेंट डिसरप्शंस. ओके, दे मस्ट बी चेक्ड अर्ली टू प्रिवेंट डिसरप्शंस. ठीक है ना, अब ये चीज होनी चाहिए. ओके, डिसरप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है. नाउ अदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू लुक इनटू, आपके पास इनोवेशन भी चाहिए. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. वी कैन नॉट ओवर रेगुलेट दीज टेक्नोलॉजीज. अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें, ओके, या फिर डिजिटल करेंसी की बात करें, इवन वी टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी, वी कैन नॉट ओवर रेगुलेट देम. We cannot over regulate them, that's for sure. Okay, now why over regulation is not required? Because it is going to undermine the innovation. आपकी इनोवेशन यहाँ पे खराब हो जाएगी. ठीक है ना, एक तो ओवर रेगुलेशन हम नहीं कर सकते. Other important thing is that the way these currencies, these particular technologies are evolving, some of them are giving a major security threat to us. Okay, now think about a situation, cross border payments जो हो रही हैं, while managing to stay beyond the reach of regulators, shows the challenges that digital innovation pose. डिजिटल इनोवेशन जो है वो चैलेंज जो है वो यहाँ पे दे रहा है. ठीक है, रेगुलेटर्स समहाउ इट्स अ चैलेंज फॉर देम. ओके, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट चैनल पे जो है ट्रेडिशनली जैसा होता था, राइट नाउ दे आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर चैनल. आपके टेररिस्ट जो हैं, दे आर यूजिंग द क्रिप्टो करेंसी चैनल. ओके, दैट्स व्हाई इट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग. Now you need to understand all this is facilitating illicit cross-border money transfer. तो मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, हवाला, फॉर दैट क्रिप्टो करेंसी इज बीइंग यूज्ड. ओके, ये आज की डेट में चल रहा है. अदर आइडिया यू नीड टू अंडरस्टैंड. एक चीज देखें आप, नाउ दिस बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी
इट इज अबाउट स्पेक्यूलेटिव एसेट. स्पेक्यूलेटिव एसेट का क्या मतलब है? मींस प्राइस की बात करें तो दिस प्राइस वट एवर बिटकॉइन द प्राइस इज, ओके, इट डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई. स्पेक्यूलेशन है कि अब सप्लाई ज्यादा हो गई, अब डिमांड कम हो गई. ओके, इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट. आप जब नोट छापते हो उसके लिए इक्विवेलेंट अमाउंट का गोल्ड आरबीआई में रखा जाता है. But in the case of cryptocurrency, there is nothing like that. Okay, that's one point here. Similar case is with the digital innovations such as digital lending. Okay, आज की डेट में digital lending भी बहुत पॉपुलर हो गई है. Now why it's an important thing? और digital lending में क्या प्रॉब्लम हो रही है? Because the rate of interest that they are charging in digital lending is really very high. बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो डिजिटल लैंडिंग में चार्ज कर रहे हैं. ओके, दैट्स द पॉइंट हियर. नाउ देर आर बीन फाइंडिंग्स दैट दीज डिजिटल lenders or companies which are running the business, they are harassing and shaming the borrowers. Okay, first thing is that they are charging really high rate of interest. बहुत ज्यादा rate of interest वो charge करते हैं. Apart from that, they are shaming the borrowers if they are not able to pay. Okay, other thing is that some of the borrowers, like, they committed suicide. देखो सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के अंदर आपको बदनाम कर दिया. So they committed suicide. Okay, and RBI then issued the regulation. फिर बाद में RBI जागा. Right now, what is the situation? Suppose if someone wants to take money for say 7 to 15 days, the rate of interest charged by the digital lenders were extremely high. Okay, ranging from 60 to 100% according to reports. Okay. These apps required the borrowers to give them permission to access all information on their smartphone under the garb of doing KYC checks. ठीक है, KYC के लेके ये सब किया जाता है. Now problem started when borrowers were unable to repay the loan. अगर कोई अपना लोन पे नहीं करता, at that time what they are doing, they are harassing them, they are publicly shaming them, even blackmailing them. Okay, these are the developments. इस टाइप की चीज आगे हो रही है, ठीक है ना? And this is not good. This is not good. Okay. Other area that has been looked into was the digital innovation in stock market. This is really important. You need to understand one thing. It has been found that there are these companies, what they are doing, they are going with algorithmic or programming trading, programmed trading. Okay, अब इसमें होता क्या है? They are running the computer software. With the help of those computer software, they are able to access the stock market earlier than the other investors. Okay, तो जो लोग दूर बैठे हुए हैं, okay, from them, because by using this programmed trading method, they are able to access Indian stock market. उनको पहले पता लग जाता है कि भाव क्या चलने वाला है, भाव बढ़ने वाला है कि घटने वाला है. That's the important point here. Okay, that's why you need some manual intervention. That's why it is important that something was to be done. Okay, so SEBI decided to embrace its own algorithms and they regulated this particular idea, the whole market of using technology for exchange trading. Okay, the stock exchange में trading होती है तो SEBI ने उसको भी regulate किया. What it is showing that new technology is coming up, new innovations are coming up. Okay, so your regulators, they have to be really very smart. Your regulators, they have to be really very smart to deal with these type of crisis. इस टाइप के क्राइसिस से डील करने के लिए उनको बिल्कुल स्मार्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना? दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर एंड इट वोंट बी इजी. इट वोंट बी इजी बिकॉज थिंग्स विल बी हाईली टेक्निकल. ओके, चीजें बहुत टेक्निकल होंगी. दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. Other thing is regarding the increasing the strength of digital surveillance. Okay, ये एक और पार्ट है. उनको डिजिटली अपने आप को बहुत इक्विप बनाना पड़ेगा टू लुक टू कीप एन आई दैट व्हाट इज हैपनिंग, चीजें किस तरफ आगे बढ़ रही हैं. उन चीजों को देखते हुए ये सारी चीजें करने की जरूरत है. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज अ टफ टास्क फॉर देम. ओके, दे हैव टू इनोवेट, दे हैव टू लुक इनटू दीज पर्टिकुलर थिंग्स. सो बैनिंग इज नॉट द सॉल्यूशन. ओके, बैन करना सॉल्यूशन नहीं है. The solution is the regulation. Regulate करना बहुत जरूरी है. And regulation won't be easy without, you can say,
having the technical capability. So your regulators, be it RBI, be it any other, they need to have the capability. वो capability इनमें होनी चाहिए, ठीक है ना? So that's why it is important. So again it is saying that ट्रेडिशनल अप्रोच इज नॉट गोइंग टू वर्क. जो आपकी ट्रेडिशनल चीजें हैं वो नहीं चलेंगी. एंड इन दिस फिनटेक, ये फाइनेंशियल मार्केट का वर्ल्ड है, ओके यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी इनोवेशन होगा. द मोर इनोवेशन विल बी इन लाइन, ठीक है ना. सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो रेगुलेटर्स विल हैव टू अपस्किल एंड यू हैव टू इंक्रीज देयर मैन पावर. अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा और अपनी मैन पावर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड. So that's it for the day then. Thank you very much. Okay.